Welcome back to Technical Block. First, let's talk about conventional fire alarm system. This is a buzzer sound. In conventional fire alarm system, FACP fire alarm control panel do not tell exact location of activated detectors or manual call points. It only tells zone in which activated detectors are installed. So finding location of activated detectors or manual call points MCP is very time-taking. Therefore, this fire alarm system is used for small areas or small building. Secondly, let's talk about Analogue Addressable Fire Alarm System. In Addressable Fire Alarm System, Fire Alarm Control Panel tells exact location of activated detectors or manual call points installed in a loop. This system is used for large area. कार्ड 3। अब यहाँ पे हमारा आ गया कार्ड नंबर 3, फॉल्ट 0, डिसेबल 0, वार्निंग 0, लूप कार्ड वर्जन 2016। डिवाइस, इसमें डिवाइस हमारा टोटल है 55। टी ब्रेकर्स इसमें नहीं है, टी ब्रेकर्स 0। टी ब्रेकर्स का मतलब क्या होता है, ये हम लगाते हैं डिवाइस लूप को एक्सटेंड करने के लिए उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे इस पैनल में, इस सिस्टम में टी ब्रेकर्स नहीं यूज किया गया है। यहाँ रेजिस्टेंस इतना है 8.4R। Last but not the least, let's talk about touchscreen analog addressable fire alarm system. This system has very easy and convenient interface. This system works as way as analog addressable system works. Only difference is that this system has touchscreen interface.